Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis that I do from Monday to Friday. Dear friend, newspaper analysis is very important because it tells you about what is happening around us. But before we start, please let me know if my voice is audible, am I visible to each and everyone. And make sure if you are new in the channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. So dear friend, this is important to tell you about why newspaper analysis is important, because it majorly we discuss about the Hindu and Indian Express, but we discuss about many aspect of the newspaper. Like जैसे आप उसमें national news, we discuss about international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in daily news analysis. Now here is the questions of the day. We'll ask you the 5 questions about these questions, they are directly from the newspaper, and quick tips with the help of mnemonics will learn about many facts. Here is the very first news article about Justice Hima Kohli heads gender sensitization and internal complaints panel. Recently, Justice Hima Kohli को nominate किया गया एज चेयरपर्सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का. अपनी एक कमेटी है सुप्रीम कोर्ट कमेटी विच इज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी. So my friend, gender sensitization जो है is a cornerstone of a fair and just society. It serves as a vital tool in the dismantling inherent biases and fostering an environment where जहाँ पे सारे लोग regardless of gender can live and work with dignity and respect. So यहाँ पे जो जस्टिस बीवी नागरथ है, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 2027 में उनको हम क्या बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज होंगी. जस्टिस बीवी नागरथ हु वाज इन द लाइन ऑफ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी. माय फ्रेंड, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज द antithesis of the ideal of equality that ought to inform every dimension of our public and private lives. This is a statement of Justice Nagrata. So Supreme Court that अगर मैं इसके background की बात करूँ तो that came into a spotlight in 2019 where a women employee accused none other than Justice Ranjan Gogoi, who was then Chief Justice of India, of sexually harassing her. So basically ये जो events था 2019 में जहाँ पे export हुआ that lacuna when a complaints was filed against the CGI, उस टाइम से हम सोच रहे थे. और करंट जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है उसके यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस कौन है, दैट इज़ डी.वाई. चंद्रचूड़. एंड सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस आर 34. और आप कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ मेनी फीमेल जजेस इन सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटली. अभी ऑब्वियस आई कैन टेल यू द हिंट्स कि उसमें मोर देन 80% जो है जो आपका मेल है वो फीमेल नहीं है. पर आप एग्जैक्ट नंबर आप बताओ कमेंट सेक्शन में, एनी स्टूडेंट नो अबाउट कि इसमें कितने हैं फीमेल जजेस एट प्रेजेंट. 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, दैट हैव नॉट लेस देन 7 मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 13 मेंबर्स. ये जो अभी कमेटी बनी है जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. हियर वी टॉक अबाउट GDP growth surged to 8.2% on manufacturing gains. My friend, if you talk about the Indian economy, that we can divide the 3 sectors of the Indian economy. One is primary sector, next one is secondary sector, and third one is tertiary sector. So majorly if you talk about primary sector is agriculture, where more than 50% of their livelihood depends on the agriculture. While we talk about the secondary sector, this majorly in India is dominating the manufacturing, and tertiary sector, yes, that is known to be a service sector. So India का the real gross domestic product है GDP. GDP क्या होता है? Goods and services produced in a year in the territory of India, that is known to be a GDP, right?
तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में दैट एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन बाय फास्टर देन प्रोजेक्टेड 8.2% quickening from financial year. Okay, so NSO, basically National Statistical Office, that released GDP data on quarterly. So NSO had in its first advanced estimates project real GDP growth for financial year was 7.3%. So nominal GDP had witnessed a growth rate of 9.6% in financial year 2024 over the growth rate of 14.2%. And NSO said, adding that real gross value added GVA had likely expanded by 7.2% in financial year 2024, that faster than financial year 2023 6.7%. So ये जो GVA है, gross value added growth, has been mainly due to significantly growth of 9.9% in the manufacturing sector in financial year 2.2 contract in financial year 2023. Next one, Rudram M2 Air to Surface Missile Flight Test Successful. Recently अभी जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, सो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वेंसडे को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया इंडिजिनसली डेवलप रुद्रम M2 सरफेस टू एयर मिसाइल. दैट वाज सरफेस टू एयर मिसाइल. इसका नाम क्या है? दैट फ्रॉम अ Su-30 MKI जेट ऑफ. और ये कहाँ से फ्लाई ऑफ हुआ? द प्लेस वाज ओडिशा. So the flight test met all the trial objectives, validating the propulsion system and control and guidance algorithm. तो ये जो है इंडिया का रुद्रम एयर 2 जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है, दैट जो कहाँ से लॉन्च हुआ? ओडिशा कोस्ट से. दिस इज़ एडिटोरियल सेक्शन. माय फ्रेंड, जब भी आप एडिटोरियल को देखते हैं तो डू नॉट सी विद द लेंस ऑफ ओनली दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. that you need to inculcate the things which is really important, because editorial में जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें आपकी vocabulary भी अच्छी होती है. And second thing that which will help you to solve the questions based on synonyms or antonyms. And the second thing that we can say is once you read the editorial, so you will have such kind of idea कि जो इसको लिखते हैं सी राजा रंजन और DK श्रीवास्तव हैं, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को लेकर के. सो बेसिकली दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट जर्नी टू 2047, दैट रेजिंग इन्वेस्टमेंट रेट्स, एम्फेसाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, दैट विल बी की. सो बेसिकली मैंने आपको जस्ट बताया से जस्ट ठीक पहले कि हमारे जो सेक्टर्स होते हैं ऑफ द इकॉनमी होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. So secondary, India is too much lagging behind if the manufacturing sector is concerned. So in that context, we should know about the fact like why India is not much availability for the manufacturing sector is concerned, right? So basically यहाँ पे क्या रिडक्शन होनी चाहिए? फास्ट रिडक्शन है पावर्टी रेशियो में. और what should be the importance of social safety that such a supply and subsidized food grains that is critically important. So let's discuss about in detail. So in light of recent development at home and abroad, we need to have a clear roadmap of India's growth. जो expectation है of the peoples are clear. We want to become a developed country by 2047. This is when India completes 100 years since independence. So obvious that to 1947 से अगर आप 2047 देखें तो we will complete 100 years in the independence. But what does it mean to become a developed country? International financial organizations जो भी हैं that currently यहाँ पे classified country with per capita income of $13.845 and above, that for the developed country. But 2047 में हमारे इंडिया के क्या हालात होंगे? This would be higher India per capita income as of now $2,500 as according to इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से, जो कि इन्होंने अप्रैल 2024 में एस्टिमेट किया था. विच शोज दैट द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रैवल बेस्ड ऑन assumptions of the future
exchange rate of rupee and domestic inflation, that we need to have an average annual real rate of growth of 6 to 7% to achieve this level of per capita income. Is it possible? So before delving into issues such as strategy of development, a simple calculation reveals that on the assumptions of increment capital output ratio of 5, which is what we have seen in recent years, a 7% of rate of growth will require a real gross fixed capital formation, और जो GFCF rate है 35% of the GDP. So we are close to 35% as of now. So okay, so dear friend, there was some network glitch, so that is why you are facing the issue. I'm sorry for the inconvenience. Now the next article here we're talking about cities warming due to effect of urbanization, climate change. As you know that recently of 2 consecutive days, Delhi is reported daytime temperature above 50 degrees Celsius. So highest ever recorded in the city. There is a reason why cities are experiencing higher temperature than non-urban rural areas. The ongoing climate change and rapid urbanizations are now defining the एंथ्रोपोजेन. एंथ्रोपोजेन मतलब जो इंसान की वजह से जो कोई चीज़ें होती है उसको उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Anthropogening with the cities experiencing both, thereby making the urban population vulnerable to the compounding impact. So India urban landscape, especially population, is projected to double by 2050, adding more than 450 million residents. So in short, that European Union that's signaling the huge historical shift, given the breakneck urbanization, our cities must be prepared for future challenge. So इसमें स्टडी क्या क्या चीज़ें शो करती है, उसमें वही सारी चीज़ें मेंशन की है जो आपको मैंने डे बिफोर ये स्टडी दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट. एंड यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स है, एरोडायनामिक्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिटी दैट टेंड टू ट्रैप मोर हीट. देखो इन शॉर्ट ऐसे समझो, लाइक जैसे हमारे अमाउंट ऑफ CO2 होती है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियस ज़्यादा उसमें गैस ट्रैप हो जाती है, जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है, दैट इज़ नॉट एबल टू escape. So same that we can see the thermodynamics and aerodynamics that properties of the cities that tend to trap more heat, making cities warmer than their rural and suburban counterparts. A phenomena known well as the urban heat island of effect. So in a study published recently that we seek to separate the warming caused by a local scale urbanization and regional scale climate change in the context of 144 major cities in India. Now we discuss the next article here, crime, punishment and child. यहाँ पे पुणे का जो पॉश केस है, that cause has brought inadequacies of criminal justice system to be a foe. ये जो राइटर हैं, that is a expert on prison reforms associated with the prison reforms program. So ये क्या है ये आर्टिकल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So पुणे जो का जो पोर्शे केस था has once again brought systematic inadequacies in the treatment of juvenile in India's criminal justice system to force. So जो bail policies है, that orders to stay in an observation home, procedure for trying minors as an adult, it liability of the parent for their children are issuing being discussed. While it is a recent nationwide study has revealed that between 2016 से लेके 2016 से 2021 के बीच में at least 9,681 children in conflict with law were transferred from prison to child care institution. 2012 में यहाँ पे visit to a Kolkata prisons uncovered a harsh reality. 50 juveniles or children जो थे in conflict with law were
incarnated. So public interest litigation जिसे आप कहते हो PIL, public interest litigation, तो जो PIL था वहाँ पे that resulting in their and transfer to children in the situation. 2013 में कैलकाटा हाई कोर्ट ने इशू किया डायरेक्शंस द reiterating legal provision to prevent such incident. 2015 में अगेन यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस के बारे में बात होनी शुरू हुई. सो यहाँ पे इन शॉर्ट ये समझना कि कोई भी सिस्टम हो दैट रिलाइज ऑन आफ्टर द फैक्ट mechanism to rectify errors is inherently flawed. So a closer look at the procedural requirement revealed critical gaps within the system, particularly at the time of questioning or interrogation at the police station. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की गारंटी देता है द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड. The Supreme Court had extended this right to a suspect at the time of questioning too. So, in conflict with the law is either an observation, home, or a place of safety. Additionally, the Juvenile Justice Board was mandated to conduct regular inspection of prison to ensure that no alleged juvenile were detained. सो अभी मैंने बताया 2017 और 19 में जो बहुत सारे कलीग्स थे यहाँ पे जो कॉलेज में स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जहाँ पे हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका में इसके इंस्पेक्शन हुए. सो जो पुलिस होती है वो मिस रिप्रेजेंट करती है द एज ऑफ द एक्यूज डिस्पाइट द चाइल्ड इन्फॉर्मिंग देम टू देयर करेक्ट एज. सो देयर राइट्स वर नेवर एक्सप्लेन टू देम. They were not aware that they could have a lawyer. The production before the magistrate was delayed or not in person. Visit by the Juvenile Justice Board or other stakeholders to ascertain that no juveniles were detained were rarely conducted. Clearly instance of the detention of children in conflict within the law in prison that seems to be recurring issues. So ये इस गैप को कम करना होगा and the rules mandate the police officer to immediately inform the district legal service authority upon the apprehension of a child. Here also the rule remains silent on the procedure that to be followed till the lawyer is assigned. So now the list of national park in India. यहाँ पे total 106 national parks हैं, 106 national park. That covers around 1.23% of the country. And जो largest national park है that is Hemis is in Ladakh. So यहाँ पे different state wise है, please code it very carefully because यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Startup Agnikul launch world का first rocket with fully 3D printed engine. Chennai headquarters space startup Agnikul Cosmos Private Limited, जिसका नाम SORTED रखा गया. अभी SORTED क्या है? Which is known to be a suborbital technology demonstrator within a single piece 3D printed engine with from श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा है आपका आंध्र प्रदेश. So Agniban SORTED is in India first launch from private launch pad called Dhanush established by Agnikul. Now it's time for quick tips. Important facts of 12th 5-year plan. German bank has 11 weapons of mass destruction. G stand for green cover, B for banking reforms, H for higher education, E for luxury of all villages, W for work opportunities, M for malnutrition and D for drinking water. ये और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है. इसको लर्न करने के mnemonics क्या यूज करो? बचपन, which means to remember length of boundary India is shared in decreasing order. The maximum boundary we share is with Bangladesh, which is 4096 km. That is for Bangladesh, China, Pakistan, Nepal. PATNA पटना टू रिमेंबर मिसाइल्स अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सिस्टम. इसको किस साल में हमने लॉन्च किया था? कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा बताओ. पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश. एक्सक्यूज मी, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको लर्न करने के लिए EX मीन्स एक्साइज ड्यूटी, CU फॉर कस्टम्स, SE फॉर सर्विस टैक्स, वैसे ये अबॉलिश हो चुका है. ठीक है. M फॉर मोटर व्हीकल टैक्स एंड E फॉर इंटरटेनमेंट टैक्स. एंड देयर फ्यू स्टूडेंट्स हु आस्क्ड अबाउट नोट्स कैसे बनाएं. तो ये देखो सारे नोट्स आपके सामने हैं. चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स ऑफ वर्क. सो विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स आप बहुत सारे नोट्स को खुद से बना सकते हैं. नाउ क्वेश्चंस ऑफ द डे एंड हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द ग्रवनी GA2. ये बात कर रहा है यहाँ पे भारत GPT की. व्हाट GPT मीन्स
चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली तीनों आर्टिकल सही है, हनुमान, भाषणी और ग्रबिंडू, ऑल थ्री आर करेक्ट वन। Corruption Perception Index that is released by, there are 4 options here: Economist Intelligence Unit, Oxfam International, Transparency International, or UNO on UN Office on Drugs and Crime. So C is the right answer. Transparency International is the right answer. In the context of modern India, Juvenile and Bharat Matha Association, that is revolutionary groups. और यहाँ पे किस में बात की गई? पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, which is 10th schedule of the Indian Constitution. And here we are with the next last questions is, कितने सही है इसमें? इसमें आपके जो options है वो D सारे सही है. So now this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding the session, please let us know in the comment section. Please share this beautiful session to your friends and family. They must aware about what is happening around us. Thank you so much for joining with us. We'll meet you in the next YouTube session. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें. Thank you so much.